લોકમત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા શહેરના પેટ્રોલ પંપ પર આજે સવારે પણ લાંબી લાઈનો જોવા મળી। ઘણા વાહનચાલકો ટાંકી ભરી લેવા માટે મજબૂર થયા, કારણ કે કેટલાકમાં પેટ્રોલ ન મળવાની અફવા ફેલાઈ ગઈ હતી। સરકાર દ્વારા પૂરતી પુરવઠાની ખાતરી છતાં લોકોને પેનિક જોવા મળી, ખાસ કરીને ઈરાન અમેરિકા વચ્ચેના સંકટ અને ભાવવધારા અંગેની ચર્ચાઓના કારણે। શહેરના મોટાભાગના પંપ પર સવારથી જ લોકોની ભીડ જોવા મળી અને વાહનચાલકો લાંબા સમય સુધી લાઈનોમાં ઊભા રહેવા મજબૂર થયા। ગઈકાલની સરખામણીએ આજે લાઈનો ઓછી હતી, પરંતુ મોડી સવાર સુધી સ્થિતિ યથાવત રહી। सर लाइनो देखाई है एमनी रीते लाइन में ऊभा रहा है, बाकी कोई तकलीफ है नहीं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कंपनी मोकले है, जोईए एटलू अमने पुरवठो मळे छे अने अमे पण पब्लिक ने जोईए एटलू पेट्रोल डीजल आपीए छे कि कोई बंधारण नहीं कि 1 लीटर लो कि 5 लीटर लो। पण हवे केटलाय पेट्रोल पंपवाळा पेलुं जे पावर पेट्रोल छे जाणी जोईने वेची रह्या छे लोको, तो आ काळाबजारी कहेवाय? ना सर, काळाबजारी ना कहेवाय कि सादू पेट्रोलनो स्टॉक ना होय तो पब्लिक शू कहे कि 2-5 रुपया वधारे छे, नाख भाई मारी गाड़ीमां चालू जोईए। ने माहौल एवो छे पब्लिकनी अंदर कि वॉर चाले छे, तो ए लोकोने एवुं लागे छे कि पेट्रोल डीजलनो जत्थो नहीं आवे एटले भाई आ जो आ भराई लो, बस बीजू कंई छे नहीं। कालथी सांजथी जे लाइनो पड़ी आज सवार लगी, पण अत्यारे सवार थई तो पण देखाई रही छे। आ पेनिक लागे छे कि लोकोमां के एक जातनुं खाली शुं लागे छे? ना, पेनिक लागे छे, कारण के सरकारे बी डिक्लेर कर्युं छे कि जोईए एटलो स्टॉक अमारी पासे अवेलेबल है। पब्लिक ने विनंती है कि पेनिक थवानी जरूर नहीं, पण सांभळवा तैयार नहीं कोई। बस आ उठ्या एटले लाइन में ऊभा रहेवानुं, फूल टेंक करावी देवानी।